जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल का 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बस्ती पंचायत के बाबा पोखर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का हस्तकला प्रदर्शनी आयोजन किया गया। निदेशक राजीव रंजन के नेतृत्व में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में विभिन्न वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा हम सभी का दायित्व के थीम पर फोटो प्रोजेक्ट, विज्ञान टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 3, रॉकेट, कृषि, पौधारोपण करने, पेड़ों की रक्षा करने, जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ों को नहीं काटने, प्रदूषण को रोकने, अपने घरों और आसपास साफ सफाई रख, बीमारियों से दूर रखने के संदेश देते हुए जागरूकता पर आधारित प्रयोग को दिखाया गया। प्रदर्शनी में आए हुए अभिभावक और गणमान्य लोगों के द्वारा बच्चों द्वारा दी गई जागरूकता विज्ञान प्रदर्शनी की काफ़ी सराहना की गई और उपस्थित लोगों के द्वारा हस्तकला से निर्मित प्रदर्शनी को अपने अपने मोबाइल में भी फोटो वीडियोज को कैद करते और बच्चों के साथ सेल्फी लेते देखे गए। निदेशक राजीव रंजन ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में सृजनात्मक और समग्र विकास की क्षमता में वृद्धि होती है। इस मौके पर प्रिंसिपल रागिनी रंजन ने बताई कि छात्रों द्वारा प्रदर्शित विज्ञान आधारित प्रयोग की जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने बताई कि हमारे विद्यालय में बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा विकास के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। इस तरह के आयोजन से छात्रों के बीच उत्साहवर्धन होता है। प्रदर्शनी में कई छात्रों ने भाग लिया है। जागरूकता कार्यक्रम में विद्यालय के कई शिक्षक, अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद थे। Greetings to all. Today, on the 2nd of December, Delhi Public School Jayanagar organized a science exhibition in the campus of our school. The students of various classes took participation in this organization, as well as their parents and guardians also visited our school campus. And every year we keep organizing such activities to promote the creativity of the students and to make them sufficient in their creation of their own. So every year on the occasion of Foundation Day of our school, we keep organizing such activities. The students were very excited, especially the models of water harvesting and other activities, rockets, flying rockets, etc. All these things were made by the students. They took participation with complete enthusiasm and excitement. Thank you. Okay, sir. Thank you. My name is Nana Kumari. I am from class 9, and this is I made the structure of ear. This is the pinna, and from here, the sound wave go to the eardrum, and there are 3 bones in the internal part of the ear: malleus, incus, and stapes. And from this sound wave go to the fenestra obliques, and extra sound wave come in the fenestra rotundus, and some sound wave moving from the middle ear and the Good morning everyone, my name is Rashi Bhatt from class 8, and my name is Yuddhika Singh from class 8, and today we are present how acetone is an inflammable substance. Let's see. How it catches fire? What you have put into the water? There is a nail polish. Nail polish you have put into water. Yes, sir. And after showing it matches, it has got fire. Yes, sir. Okay. Because acetone is a highly inflammable substance, so that it can catch easily anywhere. So I represent experiment how acetone is an inflammable substance. One more thing which you have to be careful at Yes. That's all about this. Thank you. Good morning everyone. My name is Sanna Chalke. I'm studying standard 7. Good morning everyone, myself Anokit from class 7. This is our project, the dialysis model. The scene of dialysis is called dialysis. The dialysis is a procedure to remove the waste product from the blood when the kidneys stop working. There are mainly 2 types of dialysis, hemodialysis and peritoneal dialysis. And the process of dialysis is during each dialysis session,
blood is removed from the body through the needle and is sent back through the dialyzer. This is my good morning, ma'am. Good morning. I am Ankit Anand from Standard 5. Today I am here to represent my project Chandrayaan 3. And I have made a story about Chandrayaan 3 from Chandrayaan 1 to 3. At first, India launched his first mission on moon, that is Chandrayaan 1. It discovers many molecules of water on moon. And by this we know that some particle of water is present on moon, so the life can be possible on moon. It is launched in 2008. Then we have launched the Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 is successful, but in landing he becomes failure and he can't discover anything as he can't land. And we have Chandrayaan 3. It launched on 14th July 2023. It takes 42 to 44 days to reach the moon. And it discovers many things on moon. That's all for today. Thank you. Good morning everyone, my name is Sakshi Mishra, she is Soumya Jha and she is Masoom Priya. We study in Standard 7 and this is our project. We have made the heart working model. Our heart is the vital and muscular organ of our body that pumps blood throughout the day. We have made left ventricle and right ventricle. This is the oxygenated blood and that is deoxygenated blood. We have made them colored in blue and red. The deoxygenated blood needs this supply of oxygenated blood. It pumps throughout the day. The heart beats 70 to 74 times per minute. That's all about our project. अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।